नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धनके राजपूत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड हॉगवर्ड लेगेसी का। और आज हम चलते हैं, ये मेन मिशन पूरा करते हैं, इन द शैडो ऑफ द एस्टेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कोई फास्ट ट्रेवल अनलॉक हो तो हमारी वहां पर जाने के लिए। तो इतने फास्ट ट्रेवल करते हैं हम। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिए। आपका सहयोग चाहिए चैनल ग्रो करने के लिए। तो ये फास्ट ट्रेवल है यहाँ एक, हम इसका यूज़ करते हैं और चलते हैं सेबेस्टियन के पास। आप लोगों का सहयोग हमें Not sure how I'd fare in a little place like this. काफ़ी हेल्प करेगा अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। I never thought और हमारा हाथ काफ़ी कुछ हद तक झाड़ू पर सेट हो चुका है। अब ठीक ठाक उड़ा लेते हैं हम झाड़ू को। रास्ते में अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसे कलेक्ट करते हुए चलेंगे। क्या हम इस पे नहीं उतरना पड़ेगा शायद? नहीं यार, चलते हैं, चलो मिशन पूरा करते हैं। काफ़ी दूर है यार, इतना दूर। कल बैठ के पहले यार सारे जितने फास्ट ट्रेवल है ना अनलॉक करूँगा। थोड़ा मैप एक्सप्लोर करता हूँ। ये आने जाने में बहुत टाइम लग रहा है हमारा, जिससे जो है हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। और जो चैनल पे नए आए हैं अभी और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम पूरी कोशिश abandoned करेंगे long आप ago, लोगों no को doubt. जितने स्टोरी मोड गेम हैं वो हिंदी सबटाइटल के साथ उनकी गेम प्ले वीडियो अपलोड करें। फिलहाल अभी 2 गेम चल रहे हैं, इसे अनलॉक कर लेते हैं। एक ये हॉगवर्ड लेगेसी का और एक थोड़ा पुराना गेम है असैसिन क्रीड वलहल्ला। अभी फ़िलहाल इन 2 गेम्स की हम गेम प्ले वीडियो डाल रहे हैं हिंदी सबटाइटल के साथ। और आने वाले टाइम में हम अपने सभी जितने स्टोरी मोड गेम हैं, असैसिन क्रीड की पूरी सीरीज़ और भी जो गेम है जो स्टोरी मोड गेम है, वो सभी हम हिंदी सबटाइटल के साथ डालेंगे। नहीं जा सकते आगे, थोड़ा हट के निकलना पड़ेगा। व्यू देख रहे हो यार, कितना अच्छा लगता है ना ये, वाह। काफ़ी कुछ है इस गेम में यार, करने के लिए बहुत कुछ है। ये क्या है? आई थिंक ये मर्लिन ट्रायल्स हैं, I ये know हम what बाद that में करेंगे। means. Merlin trial. फिलहाल तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ फोकस करते हैं मिशन पर अपने, कोई साइड एक्टिविटीज नहीं करेंगे। फिलहाल तो मिशन पर जो है फोकस रखते हैं अपना। हमें यहाँ सेबेस्टियन से मिलना है, वेट करना पड़ेगा। चलिए वेट करते हैं। You made it. ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, एनिमी है आसपास, वो है सामने देखो।
बात करते हैं सर, इसने हमें क्यों बुलाया है यहाँ? पहले अपने स्पेल लगा लें ढंग से, क्योंकि हो सकता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ फाइट होगी इस मिशन में, तो थोड़ा अपने के लिए तैयार कर लें अपने सेट फाइट वाले। ये लगा लेते हैं, शेडो लगा हुआ है। दरअसल यार अभी एक स्लॉट और मुझे एक्टिव करना है, 3 ही कर रखे हैं मैंने। ठीक है, अब करते हैं बात इससे। Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. तो ये This way. हमें अपनी बहन एनी से मिलवाना चाहता है, और ये भी जानना चाहता है कि उसके साथ आखिर में हुआ क्या था। Feldcroft used to be a lot livelier. वो जो With Ranrock's यहाँ lots पास में wandering कोई about all the time. Everyone किला stays है, out of sight. वो उसमें गई थी और उसके साथ वहीं पर कुछ हुआ है, और वहीं Here उसके we are. अंकल भी रहते थे। My sister should be just inside. अंदर जाना है, तो इसे ये पता करना है कि एनी के साथ आखिर में हुआ क्या था, और इसकी बीमारी का इलाज तो ये ढूंढ ही रहा है। Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivel figs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. तो इसे किसी स्पेल से There is no जादू किया गया है इसकी cure. बहन पर। When will you accept that? Never. I can never accept it. उसकी तबीयत खराब हो गई। Now look what you've done. I'm sorry. Leave. तो ये अपनी बहन का इलाज ढूंढ रहा है, और इसके चाचा का मानना है कि वो I'm sorry ठीक you had to नहीं हो see that. सकती किसी भी चीज से। If you don't mind, I just need a moment तो alone. दोनों चाचा भतीजों में Poor Sebastian. Not शायद the visit बनती he'd नहीं है hoped इस for. बात को लेकर। हमें एनी से बात करते हैं और इसके अंकल से भी बात करते हैं। I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Revelio. देख रहे हो एनिमीज दिखाई दे रहे हैं। ये गेम आने वाले टाइम में और ज्यादा मजेदार होने वाला है, और Are घातक you all right, Anne? I इंटरेस्टिंग didn't mean मिशन to आने वाले हैं intrude. इसमें। You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You तो must be इसके the ऊपर new जो जादू Vicky किया गया Sebastian है told me उसकी वजह से about. इसकी I तबीयत am. खराब रहती है। Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated.
by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. तो इससे भी लगता है कि जो मेरे ऊपर जादू किया गया है Perhaps you can help him to understand that. वो ठीक नहीं हो सकता है, तो हम ट्राई तो कर सकते हैं. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. तो एनी को भी और उसके अंकल को भी ये लगता है कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सेबेस्टियन लगा हुआ है खोज में कि किसी तरह से एनी ठीक हो जाए, जो इसको जादू किया गया है, इस पर काला जादू. Excuse me, उसकी कोई ना कोई काट होगी. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. ये सब निराश होकर बैठ गए हैं सिवाय सेबेस्टियन के. सेबेस्टियन जो है वो लगा हुआ है जी जान से अपनी बहन की बीमारी दूर करने के लिए. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. तो इसके I अंकल hope की you बात भी सही remember है. what I've said. Good वो जिस day. चीज के पीछे I want भाग to रहा see how है उसमें Sebastian's उसको faring. नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो जिस चीज के पीछे भाग रहा है would he उसे not listen गोब्लिन्स to से me? मुकाबला करना She's पड़ेगा. my sister. How are you और doing, गोब्लिन्स ने Sebastian? ही You got a शायद first-hand glance at what I'm dealing with. इसकी I बहन पर काला apologize जादू for किया my है. uncle. नीचे वाला करते I हैं. know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. काफी डिफरेंसेस It's हैं as though यार he दोनों में. blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. अब कहाँ लेके जाओगे Ranrock's भाई? loyalists are capable of so much चला more than फिर? people realize. They should not be underestimated. चलते हैं, चल भाई. जब आए हैं यहाँ तक तो All the तेरा debris साथ you'll see देंगे is from हम. whatever's going on at that abandoned estate. वैसे भी तूने They've हमारी been बहुत digging मदद for की है. something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. तो वहाँ ऊपर एनी के साथ कुछ हुआ था और ये वहीं पर हमें लेके जा रहा है. चलें फिर देखते हैं, हो सकता है फाइट करनी पड़े वहाँ. स्पेल दुरुस्त कर ले हम अपने. नहीं 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 नहीं,
थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। विंगार्डियम का यहाँ कोई काम नहीं है। एक को लगाएं या डिपल्सो लगाएं? चलो चल भाई। How much longer are we expected to dig? सामने डॉट आ रहे हैं रेड। Rock knows what he's doing. खतरा है भाई, I wanted to be a part of it. छुप के चलें। Dead wizard in my book. लेकिन ये तो नहीं जा रहा छुप के यार, ये तो अरे ये कहाँ से आया भाई? Hello? डोज करना था यार, डोज। Just you Kill wait it. till I'm on solid ground. हाँ यार, How childish. यार ये एंसेंट मैजिक के स्लॉट और देने चाहिए था हमें। अरे डोज कर रहे यार। Coming back this way. Confringo! Do you think this is funny? You are postponing the inevitable. Confringo! बड़ी तोड़फोड़ हो रही भाई। अरे यार Let's get this over with. विस्फोटक से टकरा गए, हमारे यहाँ आग लग गई। Confringo! काफी सारे हैं यार। अरे ये बंदूक है क्या है इनके पास? चल तेरा काम भी खत्म। और कोई? अरे टांग रखा था, मार यार इसे। You've made your last mistake. बॉस आए क्या? अरे बाबा, तो और आ गए। गोभी यूज करेंगे यार। हटो 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 हटो। गोभी यूज करें क्या? डाल। अरे यार, अरे हाँ यूज कर तो रही है यार काम पे अपना। Vegetable. ये भी लगा देते हैं साथ में। Vegetables in अबे यार, I won't rest. How nice. वो ये भी डालते हैं, सभी को यूज कर लेते हैं। I hate wasting my time with Confringo! हटो, साइड से हो जाओ भाई। तो यार There you are. Confringo! थोड़ा दूर रहने में ही फायदा है। Leviosa! Incendio! ओहो, पटक दिया आपका तो हमें इन्होंने में। Rather unwise coming back this way. Defendo! Leviosa! Let me go! At once! ले I will यार, make उसकी you स्पीड। pay. Let's get this over with. अबे हद हो गई यार, You're making हम this दूर जाते हैं too बिल्कुल हमारे easy. पास आ जाते हैं। I won't rest. समझ में नहीं आ रही बात इसकी यार। You call that spellcasting? Defendo! Too slow. Confringo! यार एंसेंट मैजिक यूज करना ही पड़ेगा, मैं सोच रहा था ना करना पड़े। It's almost too put me down. You are postponing the Leviosa! As if you could best the likes of me. But I'm better. You almost had a lucky shot. अबे यार हद है भाई। Confringo! Get away.
दरअसल मेरे पास पर्पल वाला लगा हुआ नहीं है, मैं सब लगाता हूँ पहले यार। इसकी शील्ड नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं हम। अब है ना, अब मार खाएगा ये। दरअसल मेरे पास I पर्पल confess, स्पेल लगा हुआ नहीं था कोई से पर्पल कलर का, इसकी शील्ड नहीं टूट पाती I थी। tried to warn you. चलो सेबेस्टियन गया, कुछ है यहाँ कलेक्ट करने के लिए? Revelio. चलो थोड़ा अब चेंज कर लेते हैं, इसे सही कर लेते हैं। पर्पल कलर हमारे पास नहीं था। इंसेंडियो लगाते हैं नीचे, या ये लगाएं? इंसेंडियो लगा लेते हैं यार, अब सही है। 3 कलर हैं, 3 कलर मोस्टली आते हैं। Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. तो यहाँ पर हुआ था इन्हीं के साथ जो कुछ हुआ है। It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And सही बात है। at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have तो set up यहाँ camp कहीं here for a रुकवुड का specific reason. पैलेस भी है शायद They have stations for आस-पास everything. कहीं। तो यहाँ हमें Revelio. कुछ क्लू देखने होंगे कि क्या है यहाँ, ऐसा क्या हुआ था एनी के साथ उस दिन यहाँ। I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing तो यहाँ more. गोब्लिन्स कुछ खुदाई कर रहे हैं। ये क्या है? Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. यानी शस्त्र भी रखे हुए हैं यहाँ पर। Revelio. पूरी लड़ाई उड़ाई का सब इंतजाम है यहाँ। और हैं क्लू हैं अभी, और क्योंकि अभी सर्किल क्लीन नहीं हुआ है, मिनी मैप में जो सर्किल है वो क्लीन नहीं हुआ है अभी। Revelio. अंदर देखते हैं। कुछ है। जब आए हैं तो आइटम कलेक्ट करते हुए चलेंगे। Revelio. अभी लेवल काफ़ी कम है यार हमारा। अगर उतने लेवल के अगर गॉब्लिन्स मिल गए या ब्लैक मैजिक करने वाले मिल गए तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, टिक नहीं पाएंगे हम उनके सामने। Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. तो ये किसी हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर का घर लग रहा है, जो बहुत सदियों पहले यहाँ रहता होगा।
तो देखते हैं कुछ क्लू मिले कि किस प्रोफेसर का घर था ये। और गोब्लिन्स यहाँ क्या कर रहे थे इस घर पे, इस पुराने खंडर घर में वो क्या कर रहे थे? क्योंकि एनी के साथ जो कुछ हुआ है वो यहीं पर हुआ है। Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. ये इस तस्वीर में कोई लेडीज है, लेकिन तस्वीर में चेहरा जला हुआ है। या तो ये उस दिन जो आग लगी थी, जिस दिन एनी को काला जादू किया गया है, या तो ये उस आग में जली है या फिर ये जानबूझकर जलाई गई है। Sebastian, और I've seen ये this है before. सामने। This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. कुछ समझ में आया? ये कुआं, Revelio. ये सब कुछ। ये हमें यादें दिखाई दी थी Sebastian, ना? This house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed अब हमें this सब बात house. बतानी पड़ेगी There was पूरी a little girl and a कि drought. The keepers जो have हम उस shown दिन me other प्रतिबंधित memories खंड as में well. गए थे, तो The वहाँ girl हमें became क्या a क्या मिला था, Hogwarts क्या हमने professor. देखा था, Her name ये was अब वही बता रहा है। Isadora Morganach. तो ये जो घर है वो इसाडोरा She का है। was one of the keepers. The keepers? जो Like वो in लड़की थी ना जो Quidditch? प्रोफेसर बन गई थी And you बाद found में a pensive in the यहीं library? हॉगवर्ट्स में, तो ये I'm उसका not घर है। following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure लेकिन I उसकी understand it फोटो all को yet. क्यों जलाया गया है? And no, कुछ not तो like राज थी Quidditch. जो उनके They यहाँ call छुपा हुआ है themselves ना? keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. सेबेस्टियन हमारी बातों को You for विश्वास नहीं answers कर about रहा what है। happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone चला फिर piled और this क्लूज here for देखते a हैं कुछ। reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. आई थिंक डिपल्सो यूज करना पड़ेगा यहाँ। बिना डिपल्सो के काम हो गया। Huh. A stairwell. Revelio. ये बेड है टूटा फूटा, नीचे जाना पड़ेगा। नहीं है यार कुछ भी, नीचे जाना पड़ेगा। और ये क्या बला है? ये निकल जाएंगे या जकड़ लेंगे हमें? ये लूमस चला के चलते हैं, अंधेरा होगा नीचे। ओ भाई इतने सारे स्पेल दिए थे तो कम से कम स्लॉट भी दे देते। तो कंफ्यूजन रहता है यार, कौन सा लगाएं कौन सा नहीं लगाएं। Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. तो सारे में They've left all of this simply strewn about. ये जकड़ने Tells वाली me they're जड़ें after फैली something हुई bigger. हैं। इसाडोरा की जर्नल एंट्री। A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. तो सेविन कलेक्ट करनी है हमें, अभी 1 हुई है। तो सारी यहाँ तो नहीं मिलेंगे शायद, हो सकता है और कहीं भी हो।
Seems these journal entries याद are from में बैठ कर Isadora's पढ़ लेंगे travels. अमीना आराम से। Revelio. अरे 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 Lumos. लूमस करो भाई, नहीं तो जकड़ लेंगी ये। ये हटाना पड़ेगा लगता है मुझे। डिपल्सो यूज करें। Revelio. Depulso. अरे उधर नहीं यार, इधर मारना है। और करो यूज। Revelio. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. क्या दिखाई दे रहा है शीशे में? कहाँ का दिखाई दे रहा है भाई? I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has अभी happened से before. विश्वास दिलाना पड़ेगा I सेबेस्टियन have को a कि rare मैं जो ability to हम see जो कह रहे whispers हैं of वो सब ancient सही है, magic. I क्योंकि हमारी don't बात know पर what I विश्वास was नहीं कर रहा है। expecting you to say, अभी but से it wasn't that. प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. तो Well फिलहाल हम then, तुम्हें सब कुछ बता invisible देंगे, लेकिन secret तुम्हें इसे ancient गुप्त ही magic रखना पड़ेगा। passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. तो चलें। एंटर द अंडरक्रॉफ्ट। शीशे के माध्यम से चलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हमारा ये प्रयास हिंदी में सबटाइटल डालने का आपको कैसा लग रहा है। Why would the door lead us here? Sebastian, look. वाओ, अब तो सेबेस्टियन को शायद विश्वास हो जाएगा कि हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. ये तो किसी तरह का शायद मैप लग रहा है। Anything helpful in the note? ओके, A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. तो हमें लगता है कि एनी के साथ जो है वो काला जादू नहीं, कुछ और हुआ है। Then we'll have to unravel what this all लेकिन क्या है means. वो भी पता But लगाना now I जरूरी need है। to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything.
Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. तब ये भी हमारा राजदार है। तो ये मिशन कंप्लीट हो गया हमारा। देखते हैं अब कौन सा मिशन करते हैं हम अगला। फिलहाल तो ये मिशन हमारा कंप्लीट है। एस्ट्रोनॉमी क्लास है। Nice to see you, my young पहले friend. प्रोफेसर गार्लिक के पास चलते हैं। क्योंकि हमें इनसे Bouncing tentacular. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by मिशन के it. साथ हमने Just प्रोफेसर yesterday, गार्लिक I का एक spent मिशन पूरा कर hours दिया है। pruning असाइनमेंट myself fertilizing shrubs मिशन and नहीं कहेंगे, flutterbug असाइनमेंट था, bushes. वो हमने पूरा कर Didn't दिया है। realize how long I'd been at it आपने until ये the आपको sun began to ध्यान होगा ना set. जब अभी गोब्लिन से हमारी Well, if फाइट हो there's रही one तो thing I मैंने love to see more than my plants thriving, it's one of my मैंड्रेक का students और doing the टेंटोक्ला same. का और Now, ready to learn चाइनीज flipendo? Chin गोभी up, का जो keep a हमने light इस्तेमाल grip, किया था and it's all in the wrist. वो तीनों Let's हमें see you एक give साथ it a यूज go. करने थे फाइट में। तो वो असाइनमेंट में यही You था। will want to focus वो with this फिलिप spell. पेंडो हमें मिला है। Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you फिलिप wanted to पेंडो। do was move a few parts. फिलिप पेंडो का क्या यूज है देख लें। न्यू Wonderfully स्पेल done. अनलॉक। If you'd like to practice a bit more, you're यूज welcome to क्या do है so इसका? here in the greenhouse. यूज Just तो दिखाओ। mind the plants, please. फिलिप पेंडो। ओके, ये ऐसे चक्कर दे देगा, घुमा देगा ये इन्हें। कोई बात नहीं, बस बहुत हो गया, देख लिया, समझ लिया। कहाँ लगाएं? चलो फिलहाल तो कहीं भी लगा लेते हैं, ट्राई तो करके देखना है। इससे क्या फर्क पड़ता है, बाद में चेंज कर देंगे। Look at that. You're a natural. ज्यादा चैलेंजिंग नहीं बना दिया है इन्होंने इस फाइट को। ये स्पेल फाइट में यूज कर लेते हैं तो ये टाइम ले लेते हैं यार, बहुत चार्ज नहीं हो पाते हैं जल्दी से। Was I? Oh, yes. और वैसे कितना The यूज करते greenhouse रहो will वैसे keep itself जो है in यूज order होते रहेंगे। without a फाइट में nudge from को me. Professor टाइम लेते Garlick, हैं फिल a होने में। moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. नहीं, कुछ नहीं पूछना हमें। Apologies, Professor. Perhaps later. Not to worry. I'll be here if you'd like to talk. यार ये मैडम प्रोफेसर कम स्टूडेंट ज्यादा लगती हैं। अब चलते हैं एस्ट्रोनॉमी क्लास में, चलें क्या? तो हाई कीप और एस्ट्रोनॉमी क्लास में चलते हैं और फास्ट ट्रेवल का यूज करते हैं। ये तो नहीं, इधर नहीं जाना हमें, इधर से जाना है।
अरे 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 क्लास तो यही है, लेकिन पहले Not even magic. शुरुआत तो करनी है यहाँ से। तो ये And your क्लास reading चल रही है is हमारी। The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. तो स्टार गेजिंग, चलिए स्टार गेजिंग का मजा लेते हैं। लेकिन ठंड हो रही है, Still, you शायद don't have सब your own? कांप You रहे हैं। can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. आ जाओ वही, चलें देख लें। Here, I can adjust that for No, you. no. नहीं, Bring नहीं। it to focus on your own. हमें खुद करना है। फोकस। Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the कांप रहे हैं great सारे के सारे, stargazers of और the मैडम कह रही कि past. बाहर चल के देखते हैं Look खुले only to मैदान the से। astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? रहम करो मैडम, सारे कांप रहे हैं। Dismissed. घर जा रहे हैं सब के सब। Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. ओके, ठीक है। तो ये हमें That's अपनी very kind of you, Amit. टेलीस्कोप देना Are you sure you दे won't रहा need है, it? I'm certain. जिससे हम स्टार It's my गेजिंग own का one. I finally got my hands on the new आनंद उठा Celestia सकें। Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. ओके, तो टेलीस्कोप जहां हम खड़े हैं इसके नीचे है, और Trying to put off my stargazing. टेलीस्कोप लाके हमें इससे मिलना है, इससे बात करनी है। How am I supposed to find Sirius in my house? अभी नहीं जाना, हमें पहले यहाँ चलना है नीचे। Revelio. ये रही This टेलीस्कोप। was his old telescope. Looks practically brand new. और यहाँ नहीं इंसेंडियो यूज करना पड़ेगा। Incendio. Revelio. A pristine night for stargazing. तो चलिए अब चलते हैं अमित के पास, और वो रहा सामने। The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope.
It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. तो ये हमारी हेल्प चाहता है. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Okay. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? तो हमारे जो दोस्त बन रहे हैं वो अपनी फील्ड के माहिर हैं. ये क्लास तो शायद 20 क्लास का एरिया लग रहा है. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. वही है, Something 20 that क्लास doesn't का quite एरिया है belong. तो. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. अगर बाहर निकले हैं तो आइटम कलेक्ट करते हुए जाएंगे. भले से हम मिशन पे हैं. It is nice having a यार fellow बार-बार फिर stargazer कौन to लेना explore आएगा? with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Lumos. It's not that creepy out here. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Okay. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. तो वो यहीं दीवार के आसपास मिलेगा. जो टेबल है, जो मेज है, वो हमें उसे ढूंढना है. वो कहाँ है? नहीं, इधर तो नहीं जाना. इंडिकेशन उधर का ही है तो उधर ही चलते हैं. Revelio. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. इसमें काफी I think मुझे इन्हें तोड़ना पड़ेगा. हटो सामने से यार. अरे हट जाओ. Wingardium Leviosa. नहीं, विंगार्डियम का असर नहीं होगा यार. इससे डिपल्स तो यूज करना पड़ेगा. Depulso. यस, वो मैं करके देख रहा था कि विंगार्डियम से हो जाएगा नहीं हो जाएगा.
Revelio. नहीं नहीं, उधर ही चलना है यार, उस तरफ भी जाना है। नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं है। दीवार के पास बताया है या दीवार पे? अरे सामने है तो यार कुछ। यार ये मकड़ी के जाला तो वहीं लगता है ना जहाँ स्पाइडर होती है। यहाँ फाइट होगी क्या? चलिए इतने हम मेज ढूंढते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं करा है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लीजिएगा। और शायद हमने मेज ढूंढ ली है। Not this close to school, Amit. Look, there's a table. I हाँ think जी, you हम should do the honors. खोज चुके हैं मेज को, और ये रहा। The constellation should appear near the center of your view. ये क्या है? क्या करना है इसका? इनको मिलान करना है क्या? करके देखते हैं। थोड़ा और हल्का सा, हाँ हो गया। I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. मेहनत करता है क्लास में, इसका मतलब। Thank you, Amit. I look forward to reading them. नहीं है। And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, ये हमें और it's भी you. खोजनी पड़ेंगी। Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।